Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #question, and I'm your personal auxiliary when I've been naked. Last 2 exams are left behind, and there's a corona endemic which is going on right now in our country. Lots of things have been changing from day to day, and थोड़ा बहुत news ये भी आ रहा है कि CBSE और उन लोग का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है. Luckily pray for you guys that तुम लोग का एग्जाम नहीं पोस्टपोन होना चाहिए. ऐसे कोई भी न्यूज आए नहीं, तो डोंट यू बिलीव ऑन ऑल दैट बुलशिट एंड आप एग्जाम देने रेगुलरली जाओ. 2 papers are left behind. I don't think so they're going to postpone your paper at any cost. But there are certain states in which, SSC exams have been got cancelled or they have been got postponed. Not cancelled, but postponed for sure. So make sure that आप exam देने दोनों भी जा रहे हो. With that, I also pray for your parents and I also pray for yourself and your neighborhoods and peers and all that stuff, that they should not get such an endemic. With that, you guys also pray for me because I'm not feeling well since morning. I hope your prayers will work out a lot for me. Thank you so much, guys. And for today, I'm going to give you importance of chapter number 5, chapter number 1 to 5 of history. I hope so you have this history textbook with you right now in your hand and a pencil to mark out all the important answers which are going to definitely come in tomorrow's, day after tomorrow's board exam. So today I'm going to be giving you 5 chapters that are important, and tomorrow again I'll make a video in that I'll give you next 4 chapters of importance. Because day by day I'll be giving you scheduling wise, importance that you will be able to digest it up in the one particular day. I hope आपने political science का importance का video देखा होगा कल, and आपका अपने ना political science पढ़ के हो गया रहेगा. In that first, second, third chapter, some chapters which are completely important. 4th and 5th you can leave it an option, but definitely first, second, third को बहुत अच्छा brush up कर लेना. With that, moving on to this chapter of importance, chapter number 1. In this page particularly, you have to study one important question, that is, what is modern historiography? Over here you can see this question, modern historiography. You have 4-5 points over here. With that, also make sure that history is originally derived from a Greek word. There is something which is important for you to mention in the very beginning if this question is asked to you. इधर पे यहाँ पे वो last में दिया हुआ है, यहाँ पर वो आपको सबसे पहला mention करने का है. Is that clear? Moving further ahead, we have question of notable scholars called René Descartes, Voltaire, George. I'll tell you guys to study only 3 notable scholars का answer over here. First one is Karl Marx. Karl Marx का answer you will definitely find in any of the board exam paper, right from this year's portion to the previous portion which we had during our time. So everywhere Karl Marx answer was completely important. You do this answer extremely in a very well good manner that you can be able to by heart this properly, and you can write down the same content whichever is given in the textbook. Okay, moving further ahead, we have Voltaire ka answer over here. Voltaire answer is again important. Make sure that you are studying this Voltaire answer properly, so that this chotu sa paragraph will help you gain 2 to 3 marks in board examination. With that, moving further ahead, we have something on NLS school. NLS school, I would say that page number 5 पे NLS school, feminist historiography, and Leopold V. Ranke. Michael Foucault, sorry. So all of these 3 questions are important. Out of these 3, any one will surely come in board examination. For sure, you have to do these 3 questions. Analyst school is something which can be asked to you for 2 marks question in short notes. Feminist historiography, they can ask you for 3 marks law, full length questions. And with that, Michael Foucault can also be a short answer question. Make sure that you are studying it in a very proper manner. Karl Marx theory answer is important. Do that answer for sure. But then moving further ahead, page number 6 में अपने पास है इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव का पेज. ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से करके जाना है. यहाँ से आपको टोटल 16 मार्क्स मिलने के चांसेस है आउट ऑफ 40 में से. जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स इतना इजी है कि आपको यहाँ पर fill in the blank 4 मार्क के लिए, complete the follow, ये identify the wrong pair 4 मार्क के लिए, complete the flow chart 4 मार्क के लिए. तो ऐसे करते करते आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स मिल जाएंगे. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू गाइस इज history and geography are the 2 papers in which you can increase your score, you can increase your percentage. I hope you will not take it so leniently that you're playing up with your own percentage and you'll be regretting the whole life that why I didn't study for
दिस टू पेपर्स। जितना मेहनत आपने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस और साइंस 2 के लिए किया, जितना स्ट्रेस आपने उस पेपर के लिए लिया, आप इस पेपर के लिए भी उतना ही स्ट्रेस लीजिए, क्योंकि इधर पे क्या आएगा मालूम है कि आपके परसेंटेज इंक्रीज हो गए। यहाँ पे कोई आपका आंसर जो एग्जामिनर है ऐसे चेक करेगा, सिर्फ चेक करेगा उसको स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग की लाइन थोड़ी बहुत वर्दी लगी ना मार्क्स देने के, तो वो बीच का आंसर चेक ही नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट चेक करके मार्क्स दे देगा। गॉट दैट? तो आपको पेपर एकदम वर्थीनेस वाला लिख के लाने का है, स्टार्टिंग और एंडिंग एकदम कड़क रहना चाहिए आपका। एंड बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हो, थोड़ा बहुत रिलेटेबल लिखते हो, तो आपको मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गाना वीना लिख के आ जाओ, जोक लिख के आ जाओ। Keeping all that stuff aside, we'll move on to second chapter now. Second chapter which we have is historiography, Indian tradition. Moving further ahead on this chapter, you don't have to study anything from page number 7, 8, and 9. You have to just directly jump onto the chapter, page number called 10. Page number 10, you will find out there is something been given to you on Orientalist historiography. Orientalist historiography over here, it's something which is completely important. You guys have to study it properly. Moving further ahead, we have V.K. Rajwade ka answer. V.K. Rajwade ka answer. This is a highly important brief which can surely be there for detailed question, for short note question. Anyways, they're going to be asking you. Make sure you're completely done with this answer. Moving further ahead, we have something called Marxist history. Marxist history is equal to Karl Marx का answer. Marxist history अगर नहीं आया तो कार्ल मार्क्स है, और कार्ल मार्क्स नहीं आया तो मार्क्स हिस्ट्री आने में से दोनों में से कोई एक आंसर तो पक्का है। यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दिस थिंग फ्रॉम माय साइड। देन मूविंग फर्दर हेड वी हैव फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ओवर हियर। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का सेम फर्स्ट चैप्टर का कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है सेकंड चैप्टर में, तो आई होप यू विल डेफिनेटली कोरिलेट दिस टू आंसर्स एंड स्टडी प्रॉपर्ली सो दैट इट विल बी हेल्पिंग यू टू गेन द फुल मार्क्स इन व्हिचएवर क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग यू। देन मूविंग फर्दर हेड ऑन पेज नंबर 14 वी हैव दिस मच बिग exercise का part. This box is important. This exercise का objective part is important. I hope you'll do it properly. Moving further ahead, we have chapter number 3. Now coming on to chapter number 3, you make sure that there are certain short forms been given. उस पे आपको full form use करेंगे, जैसे कि यूनेस्को का full form है United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization. तो ये सब आपको full forms अच्छे से याद रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा मालूम है कि आपका पेपर का इंप्रेशन बढ़ेगा। आप यूनेस्को नहीं लिख रहे, बाकी पूरा फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट में यूनेस्को लिख रहे, तो इससे मालूम पड़ता है कि सामने वालों को एक्स्ट्रा डिटेल इन डेप्थ नॉलेज है। दैट मेक्स pretty much attract the mind of the examiner towards the paper. So make sure that you study it very well. Moving further, what is applied history? Applied history is something which will come in board examination for 2 to 3 marks. I hope you guys will do it. Now, out of this question which has been asked to you, your philosophy, science, technology, management, industry and commerce, humanities, arts, and all this stuff, this can be a short question for you for 5 marks. For 4 marks detail. I hope you will study it very well so that you can get the entire 4 marks directly going inside your pocket. Moving further ahead, we have a question on we have a question on this. I'll give it to you over here. The archives का answer is over here. Page number 20. What is archives and what is the importance of it? यहाँ पे आपको 2 box दिख रहे हैं, दोनों box is very important. Archives is important from the board exam point of view. It is the same answer. It is the same answer which is also given in 12th standard arts का syllabus also. तो 12th standard के arts में archives है, तो उन लोगों को बहुत बार पूछा गया है, तो मेरे को लगता है ये आपको भी पूछा जाएगा. Definitely do it. Okay, moving further ahead, exercise part आपको इसको वैसे ही solve करने का जैसे आपने सारे exercise part को solve किए हैं. Moving further ahead, history of Indian arts, chapter number 4. Chapter number 4 में you can find out that there's folk style of painting being given. Folk style of painting over here is something which is important. Don't mess it up because surely you can find this as a question in board examination. Then moving further ahead, you don't have to study anything from page number 24 and 25, but I would say you guys to study 26 का architecture and sculpture का part. Architecture and sculpture का part is important. They can ask you for short note. Moving further ahead, we have traditions of classical performing arts. Tradition of classical performing arts का you just have to have a reference. या तो आप है ना नोट्स बनाना चालू कर दो, स्टिकी नोट्स रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए चाहिए रहता है, तो आप वैसे नोट्स बना के अगर इसके ऊपर इलैबोरेशन कर पाओ
तो दैट्स वेल इनफ, वेल गुड इनफ. मेक श्योर कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे फॉर 4 मार्क्स, फॉर 3 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज जितना बड़ा आपका आंसर रहना चाहिए. डिटेल है तो 3 पेज, शॉर्ट नोट है तो कम से कम 1 या 1.5 पेज का रहना चाहिए. ओके, सो मेक श्योर जितना बड़ा आपका आंसर रहेगा वहां पे आपकी मार्क्स उतने इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं. मूविंग फर्दर हेड वी हैव मास मीडिया एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन ओवर हियर. मास मीडिया एंड हिस्ट्री. मास मीडिया एंड हिस्ट्री में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है पता है? केसरी एंड मराठा. केसरी एंड मराठा के ऊपर लाइक दीज आर द 2 न्यूज़पेपर व्हिच वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड this questions can be asked to you in the form of objectives ki who started these papers. So and the answer is Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak. तो यार आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट पैर में भी आ सकता है. तो मेक श्योर आपको ये चीज बराबर से याद रहना चाहिए एग्जाम में पेपर लिखने के टाइम पे. देन मूविंग फर्दर हेड देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड टेलीविजन ओवर हियर. टेलीविजन ये आपको इसमें भी पूछा जाता है और वहां पर या 12th में अप्लाइड हिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट है, वहां पर भी उन लोगों को टेलीविजन के बारे में ये क्वेश्चन यही साल आया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविजन. मेक श्योर आप टेलीविजन पढ़ के जा रहे हो. दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. सी ओवर हियर पेज नंबर 35. मूविंग फर्दर हेड over here you can see that mass media and professional opportunities in history. So this is a flow chart been given to you. ये flow chart आप अच्छे से करके जाओ कि what is the use of history in mass media. Then moving further ahead, do you know, do this, try to do this, you would find it interesting, can you know, or can you help me, can you recall. ऐसा सब चीज है ना, ये जो आप डब्बे डब्बे में दिए ना, आपने देखा रहेगा कि साइंस 1 साइंस 2 में उन्होंने सब डब्बा ही पूछा है आपको. कैन यू रिकॉल, डू यू नो, हु एम आई. सो मेक श्योर आप ये सब चीज को बहुत एफिशिएंटली करके जा रहे हो एंड शुड बी वेरी मच कोलोकियल विद यू दैट आपको ये चीज याद रहना चाहिए. ओके, don't you write something which is out of the thing and don't make it colossal. I'll tell you that make it only short and sweet for all the answers which you're writing, of which you can definitely score marks of. Then moving further ahead on the chapter number 6, 7, 8 and 9, I'll give you the importance of these 4 chapters in tomorrow's video. Until we meet, I'll make sure that you guys are like completely done with this 5 chapters properly. 5 chapters means I will tell you first, second, third chapter, fourth chapter and fifth chapter means the first, second, third are something which is very important. Then if you are studying more than that, make sure you are studying objectives properly. 21 sets से आप पूरे objectives को अच्छे से कर लो. Otherwise any other reference material which you have or depend completely on textbook with the boxes question which you have. Do not try to skip anything which is which you feel is important and which you think that नहीं भी करके रहेगा तो भी चलेगा. But one more thing, make also sure that you guys have no sort of holidays. If there is a rumor being out कि अगर तुम लोगों को छुट्टी मिल गया एग्जाम में ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके एग्जाम्स रेगुलरली होते रहेंगे. There are many people who will spread this negative rumor and उसकी वजह से आप एग्जाम मत देने जाना, ऐसा वैसा कुछ सोचना मत. एग्जाम्स रहेंगे आपके. Okay, thank you so much for watching the video. Until we meet, I hope everyone of your family member will be secured from corona. All the best. Thank you.